And then the media requires a shoot of the pretty lady, so. Okay, done. Thank you. Lovely. After that wonderful photo shoot of Ms. Kalyan, we are back with a proactive health advocate. Welcome. Next on the line, Dr. Jaideep Shah, President of Foxy. His illustrious career is marked by his exceptional contributions both at the national and international level and his unwavering commitment to women's health. Welcome, sir. Dr. Rishikesh Pai, past President of Foxy. He is a distinguished personality in gynecology and reproductive medicine and currently serves as a regional trustee for Asia Oceania at the International Federation of Gynecology and Obstetrics, that's FIGO, our major body, mother body. Now, next on the line, I would like to invite our diva, Dr. Rishma Dhilan Pai, past president of Foxy. Her contributions to the field of obstetric and gynecology and reproductive medicine are truly unparalleled, unmatched. She has held and continues to hold leadership positions across leading institutions like IFFS, Foxy, ISAR. Next on the line, Dr. Nandita Palshetkar Madam, again the beauty of our Foxy Beauty with a Brain, past president of Foxy and ISAR. Dr. Palshetkar is an expert of infertility treatment and her relevant expertise has led to the introduction of cutting-edge techniques, some of which were the first of her kind in the country. Thank you. Dr. Madhuri Patel Madam, our Secretary General of Foxy, the first Secretary General, a lady Secretary General of Foxy. So that's she. Dr. Patel is the Editor-in-Chief of Journal of Obstetrics and Gynecology of India, that's called as Yogi. Honorable esteemed panelist. Now moving to why we are gathered today, I would definitely like to invite Dr. Tan to share and shed light more about Foxy. So this is going to be called as Foxy Focus Plus, and this will cover up the immunization schedule, especially the women or others. Oh my God, this is one is a Foxy Focus Plus, which has a complete detail, and another one is a standard operating procedures for Mahila Kavach cases, that's called as SOPs. ओवेस ओवेस अपने कैमरे के आगे खड़े हो जाओ ये ओवेस So this was wonderful, isn't it? Coming up with a vaccination schedule, a comprehensive vaccination schedule for women, especially adult women, because we are all known to, vaccinate our children. But when it comes to women, particularly in adults, definitely Foxy has taken this initiative. Congratulations. So you are a champion for women's health, isn't it? What actually inspired you to put this up? This cause, I mean, you're an actress and we all look up to you. So what was the initial
to come up into women's health and talk about it. Good afternoon, everyone. My dear friends in the media, thank you so much for being here. It's an honor to be on this panel among such esteemed doctors. Thank you so much for having me. I truly believe in women's health. I feel it's something which is usually ignored, something which is not given the kind of importance that it deserves. And there are various reasons for why I want to collaborate and I like to advocate women's health. I feel if we don't take care of ourselves, how are we going to be responsible or taking care of our children, which eventually form societies, communities, and the world in general? It's extremely important for the mother to be healthy and happy so that her child can be healthy and happy. I feel it's extremely important for women to be able to take care of themselves in order to take care of their families as well. So, yeah, that's pretty much the reason. That's wonderful. That's awesome, isn't it? Because your word as an ambassador goes a long way and will help our, the purpose as well. So you are carrying our purpose up. So Hopefully if this influences how many ever people and the word spreads as much, I think it's something that's so crucial and so important. I was talking to all the doctors before we got onto this panel, and the statistics are horrifying. So if we can make a difference from our end to even one life, I think it's absolutely worth it. Absolutely, isn't it? And it's going to be a motivator factor for other women as well to become an ambassador and influence person. So my question to Dr. Tank is, he has an important assignment to work through. So thank you very much, sir, to join our team. All right, so now moving on, also during this project time. So, that's one thing is we can remove the hesitancy, we can bust the myths. All right, moving on from there to Dr. Karen. These are the life stages when they have to be taken. And so we'd like to know from that. So, as has been mentioned, most people believe that vaccination बच्चों के लिए है and children are well vaccinated. Unfortunately, after they stop going to the pediatrician until they come to the gynecologist, बीच का जो gap है, nobody is seeing that. ना pediatrician देख रहे हैं, ना gynecologist देख रहे हैं. So that is why we want to spread awareness कि ये जो one vaccination which we are focusing on today, the human papilloma virus, HPV virus, best है अगर आप 9 to 14 years की उम्र में girls को देते हैं. So that is the best time because they bring the best immunity और वो समय पे जो वैक्सीन दिया जाए तो almost the entire life it will work. However, अगर वो समय पे नहीं दिया गया वैक्सीन, then whenever they come to you before pregnancy or immediately after pregnancy, when they are immediately post delivery, we can give it to them because वो time पे immediately post delivery the mother की immunity थोड़ी कम होती है, hormone changes होते हैं, तो vaginal area का cervix बहुत thin हो जाता है, injury होती है. And at that time when you give the vaccine, you can protect them very well because they are susceptible at that age. And of course, up to the age of 45, you can give the HPV vaccine. There are many other vaccines. Hepatitis B vaccine hai, COVID vaccine we spoke about. There is DPT vaccine, diphtheria, pertussis and tetanus. How many of us, हम लोग कभी injury होती है तो ले लेते हैं. But do you know that every 10 years we should be repeating the TD vaccine, diphtheria and tetanus. Then as you grow older, all vaccines आते हैं. Influenza vaccine, every year seasonally you should take vaccine because influenza can even cause death in people, it can be that severe. Then chickenpox का जो होता है, varicella vaccine, zoster vaccine, 50s में, 60s में, these vaccines should be taken. And when you're 60, 65, pneumococcal vaccine should be taken. So there are so many vaccines. Our recommendation जो हमने अभी दिया है, it is covering 9 different adult vaccines. So ऐसा नहीं है कि बच्चों 5 साल तक vaccination finish, end of story. There are vaccines throughout your lifespan and they will protect you from ill health, from being sick, from even dying sometimes of diseases. Because as you get older, तुम्हारे पास दूसरे health factors होते हैं, कभी diabetes हो गया, कभी liver problem है. So that time in fact you should be doubly careful about prevention because if you get sick, then you will be more seriously facing those conditions. So
So just to bring to your notice, अगर हम HPV vaccine देते हैं, if we give the 4 quadrivalent vaccine जो बोलते हैं, which covers against 4 HPV types, you can get 83% protection from cancer cervix. And if you give the 9-valent vaccine, 9 different types of HPV हम cover करते हैं उसमें, then you can actually give almost 98% protection from cervical cancer. मतलब ये जो cervical cancer है उसको हम eliminate कर सकते हैं if we can reach out to all the young girls out there or even women up to the age of 45. Yeah, and again, cervical cancer is a serious matter, as you all must be knowing. That जैसे माधुरी ने कहा, डॉक्टर्स भी हम कभी-कभी या प्रेजुडिस्ड, तो ये निकालने के लिए, ये बायस निकालने के लिए, एंड आई थिंक आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. इफ यू राइट यू नो कि हार्ट अटैक से मर गया बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन, तो इमीडिएटली पीपल आर स्केयर्ड अबाउट इट. सो आई थिंक रिसर्च करना आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, एंड ये वैक्सीन, ट्रस्ट मी, आई मीन बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेना चाहिए, अपने यंग बॉयज़ और यंग गर्ल्स को देना चाहिए. एंड स्पेशली जो पीरियड मेंशन किया कि हम उनको एडवाइस दे सकते हैं, वैक्सीनेशन के बारे में बोल सकते हैं, कंट्रासेप्शन के बारे में बता सकते हैं. सो इट इज़ अ होल पैकेज, एंड दैट इज़ व्हाई दिस महिला कवच केंद्र वी हैव स्टार्टेड ऑल अंडर वन रूफ, कि उनको काउंसलिंग भी दी जाए. वी हैव अ काउंसलर विद अस, नर्स हो, डॉक्टर हो. So I'd like to add that from our grandparents' time to today, the world has completely changed. Yes. Look at the carcinogens around us. We are breathing toxicity, we are eating toxic. That is the point. We are like, We don't- there was no pollution at all. Yes. They were having all Yes. nutritious food. There was no It was just purity at that point of time versus what we are consuming today. And everything around us is toxic. The digital input that we take, the food that we eat, all consumption is not on a very healthy level. And our grandparents did not have any of that. Their stress was so less as compared to the stressful lives that we live. identity of the food and as well as the pollution. Yes. That was a factor at play. Absolutely. So times are different. We need to evolve and live in 2024. And then when we have science available, why will we not use it? wonderful. So the next question, floor is open for the next question. Please. Yeah, you're audible. Sir, you're audible. You can take it out. You can take that same one. Hello, it's good. Good afternoon to everyone. Good to see you, Pajal ma'am. My name is Ayush and I'm from Bazooka Media. मेरा सवाल आप सभी से, स्पेशली काजल मैम आपसे, कि 2023 की बात करूँ तो 20 मिलियन केस दर्ज कराए गए थे कैंसर के, जिसमें से 10 मिलियन ने अपनी जान गंवा दी. और एज एन एक्टर्स भी कई फिल्म लेकर आते हैं कुछ अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिसमें पैडमैन्स है, टॉयलेट एक प्रेम कथा है, ऐसे कई मुद्दों पर फिल्म आती है. मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे कई कैंपेन्स, कई योजना आती है, लेकिन वो योजना, वो कैंपेन उस गांव और कस्बे पे छूट जाती है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और वहाँ से मेजर्स प्रॉब्लम्स हम सभी के बीच में आते हैं. तो जिस वैक्सीन की हम बात करें, जिन मुद्दों की बात करें, क्या ये वैक्सीन, क्या ये मुद्दे उस गांव और कस्बे तक पहुँचेंगे जहाँ की वुमेन अपनी फैमिली की कवच बनकर बैठी है? Hello Ayush. Yes, that's a very good question. Thank you for asking. As actors, we try our level best to spread the awareness through our movies and through our work and representing causes like this. मैं यहाँ पे आज इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मुद्दा, ये बात, ये अवेयरनेस हर जगह, हर छोटे गांव, हर लड़की तक पहुँचे और उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़े. इसके आगे आई थिंक ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी, मेरी, हम सब की, डॉक्टर्स जो यहाँ पे हैं सबकी, कि हम इस बात को फैलाएं. हम अपने आसपास के लोगों को, स्पेशली अपनी फैमिली में हमारी मम्मा, बहनें वगैरह, बेटियाँ, सबका ख्याल रखें, सबको वो वैक्सीन्स दिलवाएं जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, जिससे उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ सकता है. और जैसे इन्होंने अभी कहा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. So I think this is just our basic responsibility, and for this to spread in a vast country like ours, I think it's our collective responsibility, each and every person. So as actors we can only do so much. Spread the word, which is the fastest medium in our country, cinema and cricket. But if we all take up this responsibility and become ambassadors on a personal level, I think we will go a long way. Absolutely, very well said, because it is a personal
responsibility of each and every person to really take it up, whichever career they are, might be an actor, might be a doctor, social media, and influencers. I think it's really a collective responsibility of all of us to put it up forth, saying that yes, vaccination is available. क्यों मरे भाई जिस disease के लिए कुछ prevention है? Why should you die? Because बिल्कुल सही बात है. And you know, I think everybody's talked about responsibility. I think ये एक नया term है अभी, individual social responsibility. I think corporate responsibility तो हम समझते हैं, but हर एक आदमी को अपनी individual responsibility समझनी चाहिए. And I think अगर एक बूंद, जैसे एक्चुअली ब्रह्म कुमारीज का वो कॉन्सेप्ट है कि आप एक अच्छा काम करो और उसको बोलो आगे एक अच्छा काम करो. I think that will spread what we are trying to tell. Because can you imagine smallpox वैसे हम 15-20 साल के बाद बोल सके कि सर्वाइकल कैंसर अब एग्जिस्ट नहीं करता है. It'll be great, and that is what we are trying to do over here. कि get everybody vaccinated, get everybody protected, ताकि ये बिल्कुल disease अपने ज़िंदगी से चला जाए. That is what is the most. से सागर बनता है. That's a I fantastic hope word. that हमारे future generations और हमारे बच्चों को पता भी ना हो कि cervical cancer जैसी चीज़ थी. In fact, I was traveling the other day and I was coming from Bagdogra, and the person sitting next to me, a young girl, okay, and it just struck a conversation. She said, "Are you a professor?" And I said, "Yeah, yes, somewhat." She said, "I just said, yeah, we talk about a lot about cervical cancer." Ma'am, is that talking about a vaccine? I've already taken 2 shots when I was, before 15. I was so happy to hear this. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah. We can have the next question. So basically, I just wanted to talk about, I'm from Bright News, Vinith, and I wanted to talk about the concept you guys talking about, getting yearly checkups done to understand what diseases you have and to prevent any that might come up. And of course, I mean, at my home, we have 3 women, 2 sisters and 1 mother, and I take the yearly vaccinations and जो भी आपको रहता है ना checkup में, you get to know what all is there by the gynec also. So I wanted to know, as different associations are there mentioned in the release also, we need to know that are there any measures that even the government should take to make sure everyone knows that it is important for you to check yourself every year, so we'll understand and can prevent these kind of diseases. So are you guys planning on doing something like that? Yeah, in fact, if you are aware, in 2024 in the budget, our finance minister had mentioned specifically HPV vaccine कि हम सब young लड़कियों को schools में, primary health centers में वगैरह vaccine देना चाहते हैं. So this has assumed so much importance because India unfortunately is the largest contributor of cervical cancer to the world. We do not want that reputation. कैसे बोलते हैं diabetic capital. We don't want to be capital of cancer and diabetes. We don't want it. And so our Prime Minister, our Finance Minister, all have mentioned that. And they are making provisions to provide this vaccine across the country. और हमने भी ये जो शुरू किया है last year डॉक्टर ऋषिकेश भाई जब भी फॉक्सी प्रेसिडेंट थे, ये महिला कवच केंद्र इसीलिए शुरू किया कि one stop shop. एक जगह पे तुम जाओ, वहाँ तुम्हें काउंसलिंग भी मिले, वहाँ तुम्हें इंफॉर्मेशन भी मिले, एडवाइस भी मिले, इंजेक्शन भी मिल जाए, आगे क्या करना है वो भी मिल जाए. तो one stop shop, and like I mentioned earlier, we were the first ones to start the Mahila Kavach Kendra in our clinic, and now it has spread across the country, and we hope that the numbers will multiply. But खाली gynecologists नहीं, हर एक डॉक्टर, हर एक स्पेशलिटी ऐसा सब काम करेगी तो बहुत अवेयरनेस पैदा हो जाएगी. आप लोग तो है ही अवेयरनेस फैलाने के लिए. And moreover, beyond vaccination, we have to think about, as you said, screening. अब जिस महिला कवच केंद्र में जो वॉकिंग पर्सन जाता है, they will definitely also get. छोड़ना है. विजुअल लेते सो बाइट करना चला. Hi, how are you? Great, how are you? Very well. Good afternoon, everyone. It's really nice to be here. Thank you so much, Foxy, MSD, for having us and for holding this panel discussion. I think today we've all touched upon a very important and sensitive topic, which is HPV vaccines. I believe that it's extremely important to get this vaccine, and as women take care of our health, do a lot of preventive health,
consult our gynacs, even postpartum. After a few years, constantly keep revisiting our gynacs. Always ensure that we are up to date with our vaccines. And a big thanks to Foxy and MSD for launching the immunization calendar, which is extremely important and helps us remember the schedule, timing, and all the important vaccines that we need to take in our adulthood. So let's take care of ourselves as much as we invest in taking care of our children. Thank you. काजल मैम मेरा सवाल आपसे, जब हम वैक्सीन की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में कोविड याद आता है, क्योंकि उस समय हम लोग एक वैक्सीन के लिए एक खत्म कर लेते हैं, अब इन्होंने शुरू किया। जी मैम, तो मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके जब हम बात वैक्सीन की करते तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कोविड आता जी। है, हम वैक्सीन के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे। अब इस देश में ऐसा हो गया कि मैम अपने आधार कार्ड को अगर मोबाइल से लिंक कराएं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर होता है। ये एक वैक्सीन को लेकर आप मैं जानना चाहूँगा कि ऑडियंस के मन में जिस तरीके का एक डर है वैक्सीन को लेकर कि हमारी तबीयत ना खराब हो जाए या फिर हम अपनी जान ना गंवा दें, तो इस चीज़ को लेकर आप किस तरीके से अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहेंगे उस डर के लिए जो एक आम आदमी के मन में आज भी है? आई थिंक हमें मिथ्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, मिथ्स बस्ट करने चाहिए। और ऑफ कोर्स इतने अमेजिंग डॉक्टर्स हैं हमारे कंट्री में, हर जगह। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप अपने फिजिशियंस के पास जाइए, गाइनैक्स के पास जाइए, और वैक्सीन्स आर देयर टू सेव आवर लाइव्स, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। इट्स इम्पॉर्टेंट, जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी था, सेम वे हर एक डिज़ीज़ के लिए जिसके भी लिए वैक्सीन बनाई गई है उसे हमें यूज़ करना चाहिए। ऑफ कोर्स साइंस इज़ डेवलपिंग और हमें साइंस के साथ चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यू नो मैम, आज की जनरेशन में लड़कियों में देखा जा रहा है मेन प्रॉब्लम जैसे ब्रेस्ट कैंसर जी। है, पीसीओडी है, कम एज में ही वो लोग को ये सब प्रॉब्लमें हो रही है, और जी। वो लोग कहीं ना कहीं डरती है कुछ, मतलब ट्रीटमेंट कराने से, आपके वैक्सीन लेने से। तो लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे वो खुद को प्रोटेक्ट करें? यस प्लीज़। डेफिनेटली आजकल हम देख रहे हैं यंग लड़कियों में भी बहुत सी बीमारियाँ जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड HPV इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं। सो लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है, पोल्यूशन एनवायरनमेंट में, खाने में, हर एक चीज़ में आ गई है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल शुड बी हेल्थी, एडवाइस लेना चाहिए, एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड गो टू योर गायनोकोलॉजिस्ट इवन व्हेन यू आर नॉट सिक, दैट्स अ बिग मैसेज कि शादी के पहले डॉक्टर के पास जाओ, एडवाइस लो। तुम्हें एक ही चीज़ के लिए नहीं, खाली वैक्सीनेशन के लिए नहीं, तुम्हें अपनी फैमिली कैसे प्लान करनी है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, हेल्थ के लिए क्या ले सकते हो, प्रिवेंट क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि वैक्सीनेशन आज हर एक एज के लिए है। एडल्ट वैक्सीनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, बच्चों को तो हम सबको वैक्सीनेट कर देते हैं, मगर उसके बाद 9 to 14 ईयर्स के बीच में HPV वैक्सीन अगर वो मिस हो गया तो 45 ईयर्स तक आप लोग ले सकते हैं। दूसरे भी बहुत वैक्सीन्स हैं, Tdap वैक्सीन है, हेपेटाइटिस वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, न्यूमोकॉकल, वैरिसल। तो हर एक एज और स्टेज पे हमारे पास प्रिवेंशन के लिए चीज़ें हैं, स्क्रीनिंग के लिए कैंसर टेस्ट हैं। सो आई थिंक आप डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बी कॉन्शियस, यू कैन प्रिवेंट ऑलमोस्ट ऑल कंडीशंस, और अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो अर्ली डायग्नोज करके उनको ट्रीट कर सकते हैं। इवन मैम अगर बात करें वुमेन की, तो आप हो तो बॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप मोर देन 15 ईयर्स यू हैव कम्प्लीटेड इन इंडस्ट्री, तो आपको क्या लगता है वुमेन से रिलेटेड बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री में क्या कुछ पहले से चेंज हुआ है और क्या कुछ चेंज होना चाहिए? मैं फिल्मी क्वेश्चंस बाद में लूँगी, आज सिर्फ HPV और वैक्सीन्स और फॉक्सी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जी, मैं आपको प्राइवेट इंटरव्यू बाद में देती हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स गाइस। You're so good, to the point and exact.